हेलो ऑल, आज हम करेंगे आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे ज्यादा हम लोग इस चैप्टर पे इसलिए फोकस करने वाले हैं बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स में से एक कंसिडर किया जाता है। प्लस साथ में इट इज कंफ्यूजिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एज वेल एज लेंसेज। तो फिर चलिए जल्दी से इस पे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। द चैप्टर स्टार्ट्स विद अ फ्यू थिंग्स जो आप पहले भी क्लास में कर चुके हैं 8th क्लास में, जैसे व्हाट इज रिफ्लेक्शन। Reflection is nothing but when the light falls on a shiny surface and bounce back, making equal angle of incidence and reflection. ठीक है, अब वो कैसे होते हैं चलो स्टार्टिंग से देखते हैं, पर थोड़ा जल्दी देखते हैं बिकॉज वी वांट टू यूज मैक्सिमम ऑफ आवर टाइम ऑन द spherical lenses and mirrors. So let's see what is reflection. How does it happen from a plane mirror? सपोज करो दिस इज अ प्लेन मिरर एंड दिस इज द पेंटेड सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि प्लेन मिरर बनता कैसे है। प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी कांच के टुकड़े को हम पीछे सिल्वर कलर करते हैं और सिल्वर पेंट के पीछे हम लाइट को ब्लॉक करने के लिए डार्क पेंट कर देते हैं सो दैट जैसे कि ग्रीन या ब्लैक। इसकी वजह से क्या होता है, when the light falls on the mirror it does not go behind the mirror, it just reflects from that surface. So now this is the painted surface of the mirror and this is the shiny surface. So we are going to consider this as plane number 1 and this as plane number 2. So what is happening, suppose karo from here the light is coming and falling on the surface of the mirror. Now there is a imagined line called normal here. This is the normal. So the moment the incident ray falls on a mirror surface, it reflects back like this, making equal angle of incidence and equal angle of reflection. Can you see this thing? These two angles are always going to be equal to each other. Suppose karo this is 45 degrees, then this is also going to be 45 degrees only. Please understand, the angles are supposed to be equal. This is the first law of reflection. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection, first law of reflection. Number second law, the incident ray, the normal and reflected ray all lies in the same plane. I already told you what are the two planes. The first plane is the area where the reflection will happen and plane number 2 is behind the mirror. So the incident ray, normal and the reflected ray all lies in the same plane. This is the second law of reflection. So what are the two laws? Number first law, the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Number second, the incident ray, normal and the reflected ray all lies in the same plane. This is the diagram which you make for showcasing your two laws of reflection. Correct? Let's move forward. Now the thing is, many people do not understand the characteristics of the image formed by a plane mirror. Now please guys understand this thing. प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है? प्लेन मिरर ऑलवेज मेक्स द इमेज एज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप जब भी शीशे के सामने खड़े होते हैं आपका सर ऊपर की तरफ ही होता है, करेक्ट? If the head is on the upper side of the object also and the image also, this means that the image is erect. Got my point? Virtual, virtual का क्या मतलब होता है? Virtual का मतलब होता है नकली, imaginary. Suppose करो the image is not being formed by meeting the real rays. So we are actually imagining the rays meeting and a virtual image is formed because of that. So always remember, a plane mirror forms virtual and erect image. Number second, the size of image is always equal to the size of object. Like for example, suppose कीजिए अगर आप शीशे के सामने खड़े हैं तो जो आपकी हाइट नॉर्मली है वही आपकी हाइट इमेज की दिखाई देगी, है ना? So and the third thing is, suppose कीजिए कि अगर आप अपने शीशे से एक हाथ की दूरी पर खड़े हैं तो आपकी इमेज भी शीशे से एक हाथ की दूरी पर खड़ी है। सपोज कीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, अगर आप अपने शीशे से 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपसे आपकी इमेज कितनी दूरी पर है? 2 मीटर्स। कैसे? पहले आपसे आपकी मिरर तक की दूरी 1 मीटर, फिर उस मिरर से आपकी इमेज तक की दूरी 1 मीटर। गॉट माय पॉइंट? सो दैट इज हाउ इट बिकेम 2 meters. So the distance between you and the mirror is always going to be equal to the distance between mirror and the image. So the distance between you and the image becomes twice. Got my point till here? Are we clear till here? Chalo, let's move forward. One more characteristic which is seen in these type of images are
these images are laterally inverted. What do you mean by laterally inverted? Suppose कीजिए if you are raising your right hand in front of the mirror, then your image will be taking up its left hand. That is called lateral inversion. What do we call it? Lateral inversion. Are we clear till here? Let's write down those points also. Distance between object and mirror is equals to distance between mirror and image. Okay, last point, lateral inversion is seen. Lateral inversion का मतलब क्या है? lateral मतलब sideways, inversion means उल्टी, मतलब आपका साइड ऑपोजिट हो जाता है, साइज उल्टा हो जाता है. इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर रेजिंग योर राइट हैंड, योर इमेज विल बी रेजिंग इट्स लेफ्ट हैंड. दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. एक और एग्जांपल इस चीज का बहुत हमने कॉमनली देखा है. हैव यू गाइस ऑब्जर्व्ड द एम्बुलेंस रिटन ऑन द एम्बुलेंस? दैट इज आल्सो रिटन लेटरली इन्वर्टेड. तो जब आप उसे देखते हो तो रियलिटी में आपको उल्टा दिखाई दे रहा होता है. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो दिस वाज द मिरर्स. अभी इसी को करते करते एक और टॉपिक देख लेते हैं छोटा सा. Have you guys heard about the diffused and regular images? Diffused images क्या होती हैं? Regular images क्या होती है? Regular images, the image formed neatly using a smooth, shiny, straight mirror. Smooth, shiny और straight mirror से जो image बनती है उसे हम regular images बुलाते हैं. और अगर सपोज करो वहीं पे तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत उबड़ खाबड़ है, रफ है, बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है, उसकी वजह से जो ब्लरी, गंदी सी, इंडेफिनिट इमेज बनती है उसे हम बुलाते हैं डिफ्यूज्ड इमेज. Got my point? Chalo, quickly let's move ahead on the spherical mirrors. Give the heading spherical mirrors. Let's just rub this off quickly and get on to your spherical mirrors. Now please understand spherical mirror का एक example आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है अपने घर में. spoon. Have you seen a spoon in your house? Now please always remember the spoon का जो अंदर वाला हिस्सा होता है जो कि curved inwards होता है. The area which is curved inward is your convex. No, it's your concave mirror. ठीक है? Why concave mirror? Because concave mirror is a converging mirror that is curved inwards. Now let's see how do we make a concave mirror. See, suppose कीजिए कि ये मेरा एक मिरर है. इस मिरर की ये वाली सरफेस हमने पेंट की हुई है. कैसे पेंट करी हुई है भाई? पहले हमें करा हुआ है सिल्वर पेंट, उसके ऊपर हमने किया हुआ है कोई भी डार्क पेंट. Why dark paint? To prevent the light from flowing from one plane to the other plane. क्लियर है यहाँ तक? अब यहां पर बीच में है हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस. व्हाट डू वी कॉल इट? प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज योर पेंटेड सरफेस. ये रहा हमारा. अब सपोज करो गाइज, अगर ये स्फेरिकल हमने एक पूरे स्फेयर से काटा हुआ है तो बट ऑब्वियस सी बात है, दिस स्फेयर इज बाउंड टू हैव इट्स सेंटर. करेक्ट? सो दिस इज द सेंटर. अब मैं इसे रब कर देती हूँ अगर समझ में आ गया है तो, बिकॉज वी डोंट नीड इट एनी मोर. So this is the center. और सेंटर को हम रेडियस भी बुलाते हैं. क्या नाम लिखें इसका? CR. What is it? Center of curvature. Curvature क्या होता है? Curved surface. Center of curvature, या हम इसको also we can call radius of curvature. ठीक है? अब रेडियस या सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्ट यहां पर आकर हाफ डिस्टेंस, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, यहां पर आता है हमारा फोकस. सो F स्टैंड्स फॉर फोकस. फोकस और ये पोल जिसे हम बुलाते हैं P इज इक्वल्स टू पोल. फोकस और पोल के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल f. What is the small f? The small f stands for focal length. Focal length. Focal length का मतलब क्या है? फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसे बुलाते हैं फोकल लेंथ. Are we clear? Let's look at the labelings one more time. This is your aperture. What is this? This entire thing is your aperture, which is also called the reflecting surface. Aperture. Now, bang on in the middle of the aperture we have a pole. We have a straight line going on from the between of the aperture, that is called principal axis. On the principal axis we have center or radius of curvature. Center और radius of curvature के आगे आता है हमारा focus. Focus और pole के बीच का जो distance होता है उसे हम बुलाते हैं focal length. Clear till here? Focal length.
आई एम होपिंग इट इज क्लियर नाउ. ठीक है, चलो लेट्स सी वन थिंग हियर. अगर नोट डाउन कर लिया, देन आई एम रबिंग ऑफ अ फ्यू डिटेल्स फ्रॉम हियर बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक अ डायग्राम हियर. Now, your concave mirror is also called a converging mirror. What is it called? Converging mirror. Now, please understand the meaning of converging and diverging here. Converging mirror का मतलब होता है the mirror which brings in all the light together. It is bringing all the light together. And diverging का मतलब होता है which is diversifying the light different directions में. So concave mirror is a converging mirror. How? Now let's just suppose that an object is standing at an infinite distance. हमें नहीं पता क्या है particular distance, but it is standing very far away from the mirror. See? तो यहाँ पर दूर कहीं पे ऑब्जेक्ट लोकेटेड है. अब ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है कि रेज ऑफ लाइट आ रही है विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ऑल द रेज आर कमिंग लाइक दिस. ऑल द रेज आर कमिंग एंड फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग surface of the mirror. The moment they fall on the reflecting surface of the mirror, they are instantly going to get reflected, and due to that reflection, they are going to pass through the focus like this. सारी की सारी रेज फोकस में से पास हो गई. क्यों फोकस में से पास हो गई? बिकॉज ऑल द रेज आर कन्वर्ज्ड टुगेदर. सारी रेज को हमने कन्वर्ज कर दिया एक साथ. जैसे ही सारी रेज कन्वर्ज होते दे स्टार्टेड पासिंग फ्रॉम द फोकस. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, रिफ्लेक्शन में या फिर इमेज फॉर्मेशन में एक रूल है, जहां पर भी दो या दो से ज्यादा रेज आपस में एक दूसरे से टकरा गई, वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा. वहीं पे क्या होएगा? इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा वहीं पे. सो इमेज फॉर्मेशन अब यहाँ पे कहाँ हो रहा है? इमेज इज फॉर्म्ड एट F. नाउ सिंस द इमेज is formed exactly on F, so the size of the image is going to be point sized, or we can also call it diminished, point sized or diminished. Number third characteristic, location हो गया, size हो गया, and the third thing that we write is nature. क्या nature है? प्लीज जरा देखिए, आपको पता चल रहा होगा that the image is formed by meeting of real rays. All the real rays are falling on the mirror surface, reflecting, intersecting and making the image. So we are saying that the image is formed by real rays, and every image which is formed by real rays is called real and inverted image. What do we call it? Real and inverted. So the nature is real and inverted. That's it. Clear? चलो let's use इसे please note down कर लो, and let's use 2 more minutes and I'll explain you the rules for making rest of the ray diagrams. रे diagrams बनाने की मैं आपको रूल समझाऊंगी. रूल समझा के you are going to make all the ray diagrams for me. If you're not able to make, do not worry. In the next video, I am going to be making all 6 ray diagrams for you. And then we are going to do Cartesian sign convention, mirror formula, and apart from that, numerical का एक मैं आपको solve करके दिखा सकती हूँ. And then we'll move forward on the refraction. ठीक है, चलो जल्दी से rules लिखते हैं हम. Okay, so let's make all the rules for making ray diagrams from concave mirror. सिर्फ concave mirror के लिए use होने वाले rules बता रही हूँ मैं अभी, not the convex ones. Please see. So what are the rules? We have total, I guess, 4 rules. Suppose कीजिए ये आपका concave mirror है. The first rule states that if a ray is coming parallel to the principal axis, it will pass through the focus. What does the first rule state? First rule states that if a ray is coming parallel to the principal axis, it will pass through the focus after reflection. Second rule states that if a ray is passing through the focus, it will become parallel to the principal axis after reflection. अगर एक रे ऑलरेडी फोकस में से आ रही है तो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर and become parallel to the principal axis. This is the rule number 2. Rule number 3.
Rule number 3 states that if a ray is passing through the center of curvature, it will bounce back on the same path after reflection. If a ray is passing through the center of curvature, it will bounce back on the same path after reflection, reflect hone ke baad. Fourth and the last rule states that, now see here, last one, ये रहा आपका F, ये रहा आपका C. If a ray is falling on the pole, if a ray is falling on the pole, it will reflect back by making equal angle of incidence with equal angle of reflection. कि अगर मान लीजिए if a ray is falling on the pole, the ray will bounce back by making equal angle of incidence and reflection. These are the 4 rules you are going to be using for making 6 ray diagrams of concave mirror. 6 में से एक हम बना चुके हैं, कौन से वाला? When the object is standing at infinity. Now there are rest of 5 diagrams which you need to make. Try them by yourselves. Please understand you are going to use only 2 rules per diagram. क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया the moment 2 or more than 2 rays intersect with each other, उसी जगह पे image formation हमारी हो जाएगी. तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है. Use only any 2 ray rules and then you will be able to make your diagram. Okay, so wait for the second video to continue this chapter. Until and unless, please note down things and do let me know if it was helpful for you.